नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं एसपीसी क्या है, इसको कब इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल लिमिट, स्पेसिफिकेशन लिमिट व मीन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी क्या है, सीपी, सीपी केस, पीपी, पीपी के क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे काम करते हैं और ये क्यों जरूरी है। स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल एनालाइज प्रोसेस परफॉर्मेंस बाय प्लॉटिंग डाटा पॉइंट्स, control limits and a center line. A process should be in control to assess the process capability. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Regular monitoring of a process can prevent unnecessary inspection and adjustments. This information allow for proactive response rather than a reactive response when it may be too late or costly. A process is in statical control when only common cause variation exists and when the statical properties do not vary over time. अब जानते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट या डिजाइन स्पेसिफिकेशन लिमिट वर्सेस कस्टमर लिमिट। स्पेसिफिकेशन लिमिट आर प्रोवाइडेड बाय कस्टमर, सो दे आर एडजस्टेबल एंड दीज आर द वॉइस ऑफ द कस्टमर। इसको डिजाइन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स भी बोलते हैं। कंट्रोल लिमिट्स क्या होती हैं? कंट्रोल लिमिट्स आर set by the process and calculated with formula. They are not the voice of customer rather than voice of the process. मतलब they are not the voice of customer, they are the voice of process. कंट्रोल लिमिट को सेट करते हैं हम +-3 सिग्मा। कंट्रोल लिमिट आर लोकेटेड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव एंड बिलो द सेंटर लाइन, आल्सो कॉल्ड प्रोसेस डेविएशन या प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट। अब जानते हैं कॉमन एंड स्पेशल कॉज वेरिएशन। कॉमन कॉज वेरिएशन इज द natural and inherent variation within the process and occur with every part being measured. Before assessing the process capability, the variation must exhibit common cause variation. When a process exhibit only common cause variation and it is in control, but the control chart indicate an out of control condition, then this is called type 1 error or alpha risk. The alpha risk क्या होता है? Is the risk of claiming the process is out of control but actually it is in कंट्रोल। स्पेशल कॉज वेरिएशन क्या होती है? इज द यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। हाउएवर सच trends and other typical influence variations. Sometimes this is found to be a result of a machine change, operator change or major underlying condition change. एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि भी कोई गाड़ी है, हम उसकी एवरेज तो नॉर्मल कंडीशन में चेक करते हैं, लेकिन अगर हम उसको रोड पे चलाते हैं या डर्ट में या कहीं और ले जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए तो वेरिएशन हो जाती है। दिस वेरिएशन शुड बी एलिमिनेटेड व्हेन प्रोसेस एक्चुअली हैज स्पेशल कॉज। नाउ व्हाट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस? प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस स्टडी यूजेस डाटा फ्रॉम एन इनिशियल रन ऑफ पार्ट टू प्रेडिक्ट वेदर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेट बाय द supplier is capable of producing part within the specification limit or not provided by the customer. Customer may also require capability study as part of PPAP, production part approval process, to ensure your manufacturing process is capable of producing continually good parts. तो बेसिकली जो हमारा बेसिक पर्पज़ है इसको करने का, प्रोसेस कैपेबिलिटी का, यही है कि भी जो हमने प्रोसेस डिफाइन की है और कस्टमर के द्वारा जो हमारे को स्पेसिफिकेशंस अपर और लोअर स्पेसिफिकेशन दी हैं उनको मीट कर पा रही कि नहीं पा रही है, और जो पार्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपर और लोअर स्पेसिफिकेशन में सेंटर्ड या विद इन द लिमिट्स है कि नहीं है। द प्रोसेस कैपेबिलिटी मेजर हाउ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्यूस पार्ट विद इन स्पेसिफिकेशन। द बेसिक आइडिया इज वेरी सिंपल। यू वांट योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी सेंटर्ड ओवर द नॉमिनल, मीन्स मीन से सेंटर में होनी चाहिए और डिजायर्ड बाय द डिजाइन इंजीनियर, जो कस्टमर ने हमें दी हुई है या डिजाइन इंजीनियर ने दिया हुआ है, विद ए स्प्रेड नैरोवर देन द स्पेसिफिकेशन विड्थ। अब सीपी क्या होता है? सीपी मेजर वेदर द प्रोसेस स्प्रेड इज नैरोवर देन द स्पेसिफिकेशन विड्थ प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। और सीपी के क्या होता है? मेजर बोथ द सेंटरिंग ऑफ द प्रोसेस एज वेल एज स्प्रेड ऑफ द प्रोसेस रिलेटिव टू स्पेसिफिकेशन विड्थ प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। अब जानते हैं सीपी और सीपीके की वैल्यू कितनी होनी चाहिए किसी भी प्रोसेस को कैपेबल और नॉट कैपेबल होने के लिए। हम जानते हैं कि सीपी बताता है कि भी हमारी प्रोसेस सेंटर से कितनी दूर है या नहीं है, और सीपीके हमें बताता है कि भी हमारा जो प्रोसेस है वो जो स्पेसिफाइड लिमिट है, हमारी कस्टमर स्पेसिफाइड लिमिट है, उससे कितना अंदर है या बाहर है। लेट अस नो here CP is 0.7, CPK is 0.7, means process is out of specifications. CPK is less than 1, so process is not capable. In second case CP is 1, CPK is also 1, means process is within specification and
centered also, but barely capable, means it is unpredictable process because CPK is still less than 1.33. Here in third case, CP is 2 and CPK is 0.7, means process is centered but out of specifications, means CPK is less than 1, so process is still not capable. CP is 2 and CPK is 2, means since here CPK is greater than 1.33 and CP is also greater than 1, it is 2 and CPK is 2, so process is capable. Important note, here we find out that CP is greater than 1, then process is always capable. If CP is less than 1, process will not be capable. CPK is greater than 1 means process is capable. If CPK is less than 1, process is not capable. CPK is greater than 1.33 means process is capable. Here CPK is always less than CP. Now let us know what is design's distribution width or design specification width or specification limit, which is given by customer or design engineer, and what is process distribution width or we say control limit, which is set by manufacturing process itself. Let us take an example. Design specification is 35 plus minus 5, means nominal value is our 35, lower specification is 30 and upper specification is 35 plus 5 is 40. So design specification width is 40 minus 30 means 10. Now let us take what is process distribution width. Process distribution width we calculate by using the sigma, means 3 sigma plus 3 sigma minus. So here we calculated, if the nominal value or mean value is 35, then 3 sigma plus is 42 and 3 sigma minus is 28. So our process width is 42 minus 28. So this is called process distribution width. 99.73% of product fall within plus minus sigma limit. We seen design specification width and process distribution width. So process capability, how to calculate process capability. Part lie out of the specs, design specification width, are defective parts. They are defective parts. Here in our example, design specification width lies between 30 and 40 and process distribution lies between 28 and 42. So part between 30 to 28 are defective parts and part between 40 and 42 are our defective parts, means process is not capable. Our process is out of the control limit provided by the customer. So it is required to that our, if process must be capable, then these should be within the limit. Now let us see how to calculate process capability. Process capability is design specification width divided by 3 sigma plus 3 sigma. So here design specification width is 40 minus 30 and our 3 sigma is 42 minus 28, that is 3 sigma plus 3 sigma from the center. So when it is calculated, it is 0.71. So CP is less than 1 means process is not capable. Take the second scenario, when the process is within the design specification width. Our in this case we see when process is within the design specification width, then process distribution limit, lower limit is 32 and upper process distribution limit is 38. So 35 plus 3 sigma minus 3 sigma. How to calculate CP? Design specification width and 3 sigma plus 3 sigma. CP is 40 minus 30 divided by 38, upper limit minus lower limit 32. So CP is 1.667, means CP is greater than 1 and so process is capable. So we have taken two examples, when process is out of design specification and second is our process is within the design specification. If process is within the design specification, then CP is always greater than 1. If it is out of the design specification width, it will be less than 1. How to calculate process capability index?
process capability index CPK is minimum of the CP for the upper specification limit, we call it CPL, or CP for the lower specification limit, we call it is CPU. So CPU in this case, when process is out of the upper specification, is your upper specification minus mean divided by 3 sigma, and here CPL will be mean minus lower specification divided by 3 sigma. So CPK will be minimum of CPU and CPL. In second case, when process is out of the lower specification, then what will be the CPL and CPU? So CPU will be USL upper specification minus mean, and CPL will be mean minus lower specification. So CPK will be minimum of the CPU and CPL. Now the case we have taken, how to calculate the CPK for that when our process is out of the specification limit from the upper limit. So in this case, here nominal value is our 35 and lower specification is 30 and upper specification is 30. Our process mean is 38 and process lower specification is 34 and our process upper specification is 42. So how to calculate CP for the lower limit and CP for the upper limit? CP for the lower limit is mean minus lower divided by 3 sigma, and CP for the upper limit is upper specification minus mean, which is how we calculate. CPK will be minimum of the CPL. CPL is our mean minus lower specification. Here mean is 38 minus 30 divided by 3 sigma. It is 38 minus 34, and CPU will be 40 minus 38 divided by 3 sigma, 42 minus 38. So when we calculate, our CPL will be 2 and CPU will be 0.5. So minimum of this is 0.5, means process is out from the upper specification limit. Since process is since CPK is less than 1 and less than 1.33, so our process is not capable. Even if our CP is greater than 1 but CPK is less than 1, so our process is not capable. तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, काफ़ी स्टडी मैंने भी की है, कुछ मेरे भी जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस पे काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ like, share and subscribe the channel. I will be very thankful for that. Thank you very much.